But before I proceed and start my session, let me express my gratitude and thanks to first and foremost Dr. Navneet for inviting me for this session, and two coordinators of this program, Dr. Surabhi Singhal and Dr. Vatsala. Uh, it was, although I was invited at a very short notice, uh, we have a lot of, I think सर का डिस्कनेक्ट हो गया है वत्सला मैम. Your mic is. Yes, sir. I think उनका internet connection थोड़ा unstable है. We'll just look into it, sir. Okay. Am I audible now? Yes, sir. Perfect. Perfect. Yeah, I think there was some, technical error, so we lost the connectivity. So really, I'm very thankful to Dr. Navneet, Dr. Singh, Surabhi, and Dr. Vatsala for having me here. And it would be more like a pleasure for me, and this is like an honor for me to share my experiences with our distinguished participants from. Just I came to know that they are representing 18 states. That is very nice to hear, very soothing to hear. So I would try to give my best in this session. And I was going through the whatever Dr. Survi has shared with me regarding the last, because this workshop is going from 27th February. So I've gone through the sessions, whatever you had on 27th and 28th and 1st March. Yesterday's session was not with me. So on the basis of the previous 3 days proceedings during the FDP, I tried to come out with some topic which has not been covered so far. So I reached at a conclusion that various facets of of national education policy 2020 has already been covered. So it will be nice to have discussion with our faculty members about their role. What are the expectations of national education policy from teachers like us? Because since the start of policy introduction or establishment of UGC, various committees have and commissions have come up. And we have been having a bulky kind of policy documents. But as a teacher, we have to look after, we have to find out what are our duties, what we are supposed to perform, and in what way you can contribute in the line of National Education Policy 2020. So my session will be based on the role of teachers in the light of National Education Policy. I have identified few facets of National Education Policy, and accordingly, how and in what way we can contribute. So I will start my presentation. Let me just give me a minute. Sir, are you there?
Yeah, just give me a second. I am Okay, okay. uploading my PPT. Okay, Dr. Vatsala, is my PPT visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Perfectly visible. Perfectly visible, sir. Move कैसे करेंगे यहाँ से? Just a minute. ठीक नहीं 5 मिनट में बुलाऊंगा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हाँ so sorry for keeping you people waiting because what we use that is Google Meet. So Zoom is a bit advanced than the Google Meet. Therefore, sometimes we feel problem while using the Zoom. Anyway, the PPTs are before you, and as I have informed you that today we shall be talking about major facets, only the selected aspects of this, because this is a 65-page document. So in a 1.5 hour session, you cannot justify by covering all those topics. So what I have tried to identify a few of the major aspects of National Education Policy 2020 and how a teacher who are working in a conventional mode of education or distance mode of education. I hope in this group we have teachers from, both the mode of education, conventional from ODL. Is it, Dr. Vatsala? Yes, sir. Yeah. So therefore, I have planned the session accordingly so that we can cover the role of both kind of teacher, whether they are working in distance education system or in a conventional mode of education. So we shall be going through those topics and okay. And this is my session plan. I hope this is visible. My session plan is visible. Yes, sir. Okay. Perfect. Yeah. First and foremost, I will try to present and brief overview of National Education Policy 2020. Then we will come up to the major aspects of the policy, that is National Education Policy. And then what are the expectations from teachers? What National Education Policy talks about and what the policy wants from teachers who are working in a ODL mode or in a conventional mode of education. Then side by side, we shall be also discussing about what can be implementation strategies by the teachers.
what teachers can do towards implementation of National Education Policy 2020. But keep in mind that only the selected aspects of important aspects of National Education Policy I have tried to cover in this presentation. And if time permits, at the end of the session will be open for discussion and question answer and so on. Okay. Now coming to the National Education Policy 2020. As a teacher, it is needless to mention that National Education Policy 2020 is not a first document which has come up. Before that, various kind of policy documents have come up because it was the demand of the time. When we got independence in 1947, the educational system what we had was in a very, bad shape. The whole educational planning and administration was oriented towards fulfilling the economical or business objectives of British government. So actually, we were having some sort of British legacy, which were directing the national atmosphere or national planning of educational planning of India. But after independence, when we got our own government, so obviously we all know that the first commission which was set up to look after the educational problems and come up with some remedies to rectify those shortcomings and address those problems was Dr. S. Radhakrishnan Commission. I think it was 1948 that commission was set up, and after that in 1956, I think, UGC, University Grants Commission came up. Then in 1966, a commission, that was a very famous commission, actually, that paved the way and show the direction for the first national education policy. And that commission was Kothari Commission. In 1966, the Kothari Commission came up, and a first education policy was introduced in 1968. And in 1968 policy, we can see the various recommendations of the Kothari Commission, and those commission were basically more focused on primary and middle and senior secondary or secondary level education, because this was a sector which were very much neglected during the British period. So it was a prime importance for the government and policy makers to address the problems faced at the primary level of education. So the Kothari Commission focused on the reforms in the primary level education, and that was reflected in the 1968 document, which was the first education policy document. And then in 1986, we came up with a second education policy, 1986, and the same policy was modified in 1992, 2001, and 2005. 2005, we all know that right to education was introduced. So after these modifications, government tried to make the education policy of 1986 more comprehensive and more people friendly. Okay, and recently what we have is National Education Policy 2020, which is the third education policy in India, third education policy, which is coming up after almost 34 years. This is a very big gap. It is after 34 years that now we have come up with a latest National Education Policy in 2020, which was launched on 29th July 2020.
And although it is a 65-page document, very brief document in comparison to previous two national education policy of 1968 and 1986, it is a 65-page document, but it has a various dimensions. And if you go through those dimensions, each dimension expects a separate kind of document, multi-pages document. So it may be brief, but it is a comprehensive in nature, and educationists feel that it is the some sort of paradigm shift or some sort of uh, reformist or some sort of unique education policy which has come up as per the requirement of the 21st century. It is actually presenting the new vision for the India's existing education system, which has seen major reforms almost 34 years back. So it was high time to for Government of India to come up with the policy document which addresses the problems and concerns and issues what we have observed in the last 34 years. So when you identify those gaps, then you are able to come up with the remedies. So what Government of India has done is that after identifying those gaps, it has come up with this policy document which emphasizes on what the United Nations Development Sustainable Development Goals uh, have been taken care of in the policy document. And moreover, yes, of course, we are taking care of development agenda or sustainable development goals of the United Nations. But at the same time, the uniqueness of this education policy is that it takes care of Indian culture, Indian value, traditions, in diversity, languages, and so on and so forth. Therefore, we can see that National Education Policy 2020 focuses on Indian knowledge system, which is in sync with the innovative strategies and methods which have emerged in the 21st century. So actually, this policy document tries to inculcate or integrate the Indian value system, Indian education system, Indian culture system with the modern requirement of the people, but without compromising its basic characteristics of Indianness, localness. So these are the few points which I'm presenting as a background for the national education policy. Now coming to the present policy document, which is divided into 4 parts. I think since we are teacher, so you all might have already gone through these aspects. So just to refresh yourselves and myself, I'm presenting this fact that this policy document is divided into 4 parts. First part is related to school education. Second part is related to higher education. Third part is related to other key areas of focus. And fourth part is titled Making It Happen. I mean, plan of action, we can say. Some strategies have been discussed over there, how we are going to do all those 3 aspects which have been discussed previously. So this document is divided into 4 parts and again subdivided into 27 chapters. You all might have seen this document. I'm showing you. This is divided into 27 chapters and based on 65 pages. Okay. Moving forward. Okay. Now coming to what are the major
points, what are the major areas which have been focused, which have been given importance in this policy document. So first and foremost, equity, access, and quality higher education. Accessibility and equity. It is not that it is coming first time in this national education policy. Previously also, the issues related to equity and access to higher education, especially, have been discussed and remedies have been given. But this education policy gives us more importance or emphasizes upon providing equitable education without any kind of discrimination, creating maximum accessibility to learners, and especially those learners who are cut off from the mainstream of the society, who are from the downtrodden society, but without compromising the quality. At one side, this policy discusses about equity and access. Then another aspect is talks about quality higher education. So without compromising your quality, you have to accommodate maximum people so that the issue of equity and accessibility is considered and taken care of. Okay. Second proposal, which national education policy gives about higher education, is increasing the gross enrollment ratio. Presently, we have around 27% of gross enrollment ratio in higher education, but national education policy proposes that by 2035, I mean after right now we are in 2023, so after 12 years, it envisages that gross enrollment ratio should reach up to the level of 50%. Further, the policy talks about making the education more inclusive. And how you can make it more inclusive? If you offer these academic programs in different Indian languages, local languages, then ultimately what will be the result? Result will be that we shall be able to accommodate more and more people, because our country, we all know, believes in Vasudhaiva Kutumbakam, अनेकता में एकता। तो हम सभी भाषाओं का, सभी क्षेत्रों का जब समावेश हमारा देश है, तो हम किसी एक भाषा के साथ या किसी ऐसे लोगों के साथ जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, एक विशेष भाषा का, एक विशेष संस्कृति का प्रयोग करते हैं, हम उनको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज दैट यस, you can go with the English medium. Yes, offer your program in the English medium. But at the same time, those academic programs which are being offered through English medium only, those academic programs, those learning materials should be translated into regional languages, local languages, so that the education system is made more inclusive and which is accessible to all. Therefore, we can see presently that various state governments have come up with an idea to translate the technical and medical education learning materials into the regional languages. Even All India Council for Technical Education ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि जितने भी अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई पुस्तकें हैं, अंग्रेजी की, इंजीनियरिंग की और मेडिकल साइंसेस की, उनमें से कुछ किताबों का उन्होंने भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद करना शुरू कर दिया है। और कुछ राज्य सरकारें भी आगे आई हैं, इसको किया जा सकता है और करना भी चाहिए।
तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक बहुत ही बड़ा टेक अवे है वो ये है कि इट टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग द रीजनल लैंग्वेजेस। अभी तक जिसको एक तरह से साइड में रखा गया था, लेकिन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको फोकल पॉइंट बना करके कहा गया है कि हम लोगों के साथ न्याय और इक्विटी और एक्सेसिबिलिटी तभी बढ़ा सकते हैं, एक इंक्लूसिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट हमारा तभी तैयार हो सकता है जब हम क्षेत्रीय भाषाओं को हम प्रमोट करें और उन भाषाओं में अपने लर्निंग मटेरियल्स का हम या तो उत्पादन करें, लिखें, या जो एग्जिस्टिंग लर्निंग मटेरियल्स है हम उसका अनुवाद करें, हम उसको ट्रांसलेट करें। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक स्टेप है। उसके बाद जो है नेशनल एजुकेशन जो बात करती है, टॉक्स अबाउट मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज। आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कोई अगर इंजीनियरिंग का छात्र है, अगर वो म्यूजिक पढ़ना चाहता है, शास्त्रीय संगीत करना चाहता है, तो हु आर वी टू स्टॉप देम? उनके लिए आप दरवाजे खुले रखिए, उनके लिए आप ऑप्शंस दीजिए। यस, आप चाहें तो साथ साथ इंजीनियरिंग के साथ साथ आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। कोई अगर आर्ट का कोई बंदा है, अगर वो कुछ साइंस का किसी एक विषय से उसको अगर प्रेम है, उसको अगर पढ़ना चाहता है, तो हमें रोकने का हक उसे नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है हमारी होनी चाहिए पढ़ने पढ़ाने की। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो कोर कॉम्पिटेंस एरियाज हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उसको आप डिमिनिश करिए, ऐसा भी नहीं है। कहा यह गया है कि हम कॉम्पिटेंस को बहाल रखते हुए उस मेजर एरिया का जो वेटेज है, उसके क्रेडिट को इंटीग्रेट करते हुए, उसको रिटेन करते हुए हम कुछ एडिशनल क्रेडिट्स भी ऑफर करें, जिसको बच्चे करने के बाद जो उनकी इच्छा शक्ति जो है या उनकी जो इच्छा है अलग कुछ करने की, उसका जो शौक है, उसको पूरा कर सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कोर competency area. Okay, then he talks about multiple entry and exit and academic bank of credit. अब जैसे आप सबको पता है कि अब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने शुरू भी कर दिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी चर्चा की गई है। आपका जो है यूजीसी का जो है वो फ्रेमवर्क भी आ चुका है। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट में ये प्रावधान किया गया है, मेरे ख्याल से ये बातें हुई होंगी पिछले 3 दिनों की जो चर्चाएं हुई आप लोगों की, कि अगर कोई बच्चा यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेता है और 1 साल पढ़ के वो निकलना चाहता है, कहीं और किसी और संस्थान में जाना चाहता है अपनी पढ़ाई के लिए, या इवन उसको आगे पढ़ने की इच्छा भी ना हो सकता है, तो क्या वो 3 साल का, सपोज करिए मान लिया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम उसका है, तो अगर 1 साल बच्चे ने पढ़ा है एंड इफ ही और शी वांट्स टू एग्जिट, तो 1 साल जो उसने लगाया पढ़ाई में, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि यस, उस बच्चे ने 1 साल पढ़ाई की है तो उसको इसका हक है कि 1 साल का उसको उसका मुआवजा मिले। एक लेबर को भी मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत मामूली सा एग्जांपल है, कि आपने किसी लेबर को हायर किया और उसने बेचारे ने 2 घंटे काम किया, उसकी तबीयत खराब हो गई या उसके घर में कुछ अर्जेंसी आ गई, वो जाना चाहता है, तो हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है कि उसने 2 घंटे जो काम किया उसको हम उसका वेज देकर के बोलेंगे ठीक है तुम जाओ। तो एक बच्चा जो ठीक है अंडर ग्रेजुएट में उसने 3 इयर्स के प्रोग्राम में उसने एडमिशन लिया है, लेकिन 1 साल करने के बाद वो वापस मतलब निकलना चाहता है किसी कारण से, या किसी अन्य संस्थान में जाना चाहता है आगे की पढ़ाई के लिए, तो 1 साल का जो है उसको आप कुछ ना कुछ क्रेडिट तो देंगे ना। आमतौर से 3 साल का जो प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, वो 120 क्रेडिट का मान लीजिए, 40-40, 40 × 3
120 क्रेडिट्स। तो एक साल में उसने 40 क्रेडिट तो अर्न किया है ना, कुछ सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं, तो उस 40 क्रेडिट का हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और प्रमाण पत्र क्या होगा? वो सर्टिफिकेट होगा। 3 साल के प्रोग्राम में 1 साल पढ़ने के बाद कोई बच्चा अगर एग्जिट होना चाहता है तो ही और शी कैन एग्जिट विथ अ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इन अ सो एंड सो डिसिप्लिन और सो एंड सो कोर्स, जो भी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको देंगे। 2 साल अगर कंप्लीट करके निकलता है तो डिप्लोमा लेके निकलेगा, और 3 साल अगर कर लिया तो उसने फिर ठीक है, ग्रेजुएट की उसकी डिग्री मिल जाएगी। ये तो हो गई एग्जिट की। सपोज करिए कि वो बंदा फिर 1 साल कहीं और से लेकर के आया था, अब किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता है सेकेंड ईयर में, तो क्या आप सेकेंड ईयर में उसको एंट्री नहीं देंगे? देंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि एक बच्चा 1 साल के निकलने के बाद दूसरे साल किसी और संस्थान में जाना चाहता है, इफ ही और शी वांट्स टू एंटर इनटू टेक एडमिशन इनटू अनदर इंस्टीट्यूशन, then yes, whatever he has earned, he or she has earned 40 credit, that will be considered for admission into second year of the degree program or any other program। उसका अगर मैपिंग आपसे इंस्टीट्यूशन से अगर उसका मैपिंग अगर मैच करता है तो आप उसको दे सकते हैं एडमिशन। तो यहीं पे बात आती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नर्स, एक ऐसा एक क्रिएट किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म जहां पे इंस्टीट्यूशंस भी रजिस्टर्ड होंगे और बच्चे का भी इनरोलमेंट उसमें होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और स्टूडेंट्स ने जो वट एवर he or she is learning, whatever he or she is earning in the form of educational credit, that will be deposited in their respective accounts. So that is utilized whenever and wherever that learner wants। यानी एक कि आपकी फिक्स डिपॉजिट है, वहां पे आप क्रेडिट एक्यूमुलेट हुए हैं, आप कल होकर के जाएंगे तो आप बताएंगे कि हमने ये क्रेडिट हमने अर्न कर लिया है, हमें सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाए। इंस्टीट्यूशन अगर वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर्ड है और जो कोर्सेज आपने किए हैं उस कोर्सेज की मैपिंग उस इंस्टीट्यूशन ने की है, तो चेक करने के बाद वो आपका जो 40 क्रेडिट है दैट विल बी ट्रांसफर टू योर अकाउंट इन अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। सो आपने 40 क्रेडिट जो यहाँ अर्न किया वो आपका वो बर्बाद नहीं होगा, बल्कि वहां पे वो काउंट होगा, और बाकी के जो रिमेनिंग क्रेडिट से पूरा करेंगे और आप डिग्री लेकर के बाहर आ जाएंगे। सो ये पूरी चेन जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो बनाई गई है, दैट इज फॉर मेकिंग द एजुकेशन, स्पेशली द हायर एजुकेशन, मोर accessible to the learners। Then एक और अहम मुद्दा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेरूज। अभी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, चल रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, ऑफर हो रहे हैं, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज विल बी सेटअप, ताकि हम इस एरिया पे स्पेसिफिकली एक फोकस्ड वे में हम अपना ध्यान केंद्रित कर सके। फिर उसके अलावा है टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो दुनिया में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, है ना, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने कैंपसेस को इंडिया में सेटअप करें। अभी तक ऐसा प्रोविजन नहीं था। बच्चे क्या करते थे कि पढ़ने पढ़ाने के लिए विदेशों में जाते थे। तो इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि जो हमारा जो एक आउटफ्लो है स्टूडेंट्स का, हमारा जो पैसा है जो दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, वो पैसा क्यों ना हम अपने पास यहाँ पे ही यूनिवर्सिटीज आ जाए, यहाँ पे भी वो अपने कैंपसेस खोलें और बच्चे को बाहर ना जाना पड़े, उसका पढ़ाई का खर्चा भी कम हो। बाहर में क्या है, वी आर पेइंग इन डॉलर्स, वी आर पेइंग इन यूरोज एंड वी आर
अदर फॉरेन करेंसीज। अगर इंडिया में है तो आपके एजुकेशन क्या है, वो आपको सस्ती मिल सकती है, वो अगर वो यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कैंपसेस खोल दें तो। लेकिन अब ये इसमें भी चैलेंजेस बहुत सारी हैं जो ग्रेजुअली एड्रेस होंगी, है ना, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अपना इंटरेस्ट देखेंगी, व्हाई दे शुड गो एंड ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया, व्हाई दे शुड रिक्रूट देयर फैकल्टी मेंबर्स in India, what will be the cost factors, in what way they are going to be equally benefited. So these are the issues which will come up, but policy document says that this will make quality education more accessible, और इससे हमारा जो ड्रेन हो रहा है रिसोर्सेज का वो कम हो। ठीक है, और क्या क्या इसमें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रेजेंटली इज अ रेगुलेटरी बॉडी, नैक एक्रेडिटेशन बॉडी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह रही है कि वी आर गोइंग टू कम अप विद अ न्यू रेगुलेशन व्हिच इज गोइंग टू बी टाइट बट लाइट, यानी हम उतना ही आप पे सख्ती करेंगे जितना आप हमें करना चाहिए, यानी हम रेगुलेशन इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन उसमें आपकी भागीदारी जो है, इंस्टीट्यूशन की भागीदारी जो है वो भी सुनिश्चित होगी कि वो भी इक्वली कोऑर्डिनेट करेंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे टू मेक द हायर एजुकेशन मोर learner friendly, equitable, accessible, economical, and as per the requirements and demands of the country. So और इसी में एक प्रपोजल है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप की जाएगी, उसके नीचे जो है 4 वर्टिकल्स होंगे, जो अलग अलग जो है जनरल एजुकेशन काउंसिल की बात हो रही है उसमें, फिर 4 बॉडीज हैं, उसकी बातें हो रही हैं, तो ये एक मेजर पॉइंट ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। फिर रिसर्च पे भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हो रही है, क्रिएशन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और नेशनल रिसर्च फंड की भी बात हो रही है। फाउंडेशन क्रिएट होगी और एक फंड, नेशनल रिसर्च फंड जो है वो क्रिएट होगा ताकि रिसर्च को कंट्री में बढ़ावा मिले। टीचर एजुकेशन की बात हो रही है इसमें कि टीचर एजुकेशन को कैसे रिवैम्प किया जाए, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, जो एनसी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो रेगुलेट कर रही है, उसमें भी रिफॉर्म्स एंड उसको रिवैम्प करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ पॉइंट्स बताऊं, उसका फिर आगे हम लोग जो आज का मेजर पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद बात हो रही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी थ्रू इंसेंटिव्स एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि आपका जो भी प्लान है वो धरातल पे तभी उतरेगा जब आपके फैकल्टी कॉम्पिटेंट होंगे। फैकल्टी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उसको आप इफ यू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देम, प्रिजर्व देम एट लीस्ट, that is going to be more fruitful for your institution. और governance and leadership, because आपके फैकल्टी मेंबर्स हो सकता है कि काफी इनोवेटिव है, काफी अच्छे हैं, लेकिन जो टॉप बॉडीज हैं, जो लीडरशिप है, they should also be equally innovative and capable of handling the responsibilities to come out or implement the effective administration, provide the good leadership. So गवर्नेंस एंड लीडरशिप की भी इसमें बात हुई है कि टीचर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग तो होगी होगी, दैट इज मैंडेटरी, बट बिसाइड्स द टीचर्स, द हायर अप्स at the level of vice chancellor, pro vice chancellors, registrars,
deans, etc., chairpersons, those are also supposed to be uh, professionally developed so that they can give a able leadership, a visionary leadership to any particular institution and make it more, progressive, more developed. So these were the few points, major points, which have been highlighted in national education policy. Now, huh, now as um I told you at the beginning, that my presentation will be covering the both mode of teachers, distance and conventional mode of education. Some people say that the national education policy is focusing more on conventional mode of education, face-to-face education. It is ignoring the open and distance learning system. I think, in my opinion, that perception is totally wrong, because whatever I have presented just in the previous two slides, if you examine those areas, you can easily say that whatever points have been discussed over there, that is very much close and related to the spirit of or features of open and distance learning. I will give you some examples also in the coming slides, how it is presenting the philosophy of distance education. It talks about learner-centeredness, it talks about formative assessment, it talks about openness, more accessibility, flexibility, technology intervention, open learning. Openness means what? Flexibility. In distance education, what we believe that open means it is a philosophy. Open learning is a philosophy and distance is a method. If I'm talking about openness, it means I'm talking about flexibility. So whole national education policy document is talking about giving more and more flexibility to learners. So that is the main, spirit of open and distance learning system, giving more flexibility to learners. So you cannot say that national education policy is ignoring the open and distance learning system. Freedom of choices. In distance education system, what we do, we give maximum freedom to learners. As per your requirements, from the basket of subjects, you can choose the course as per your requirement. You can appear in the examination as per your requirement. At IGNU, we are conducting the term examinations twice a year. First is conducted in the month of June, and second is conducted in the month of December. Suppose I'm not interested to appear in the June term examination, I can appear in the December. If I'm not interested in appearing in the December examination, I'm not well prepared, I will appear in the June examination. So these kind of freedoms are already available in open distance learning system, and the same kind of freedom has been advocated in the national education policy. Distance education is all about implementation of various tools and technologies for the educational transaction and delivery of academic programs. National education policy also talks about technology intervention and ICT, digital intervention, etc. So overall, if you examine the national education policy, there is a clear glimpses. There are clear, instances and glimpses which clearly says, yes,
we take care of distance education system, open and distance learning. Now, see, in distance education, what we say, anyone, anytime, anywhere. Just summarizing the discussion, what I was discussing in the previous slide. Anyone, national education policy says that no restriction, minimum restriction, give May I, maximum sir? access. Yeah. Yeah, actually, sir, the overview is the national education policy is just giving the various opportunities to our students so that a student can prepare for future upcoming challenges. And we are also like government or like our education system is also providing like n numbers of opportunities so that a student will opt a program, a student will opt a course and some other thing as per his or her choice. And we are just giving the flexibility also so that if require, if we have a requirement in between, so we just add some more things in our curriculum. So basically flexibility and totally student centric curriculum we are providing. Yeah, you are right. Actually, this is not a point which are being discussed first time, but point is in the why this is important in this perspective and this policy document, that it has been emphasized upon. Emphasized upon. Yes, we have to be. This cannot be a one of the, a smaller aspects of educational delivery. You have to make it a focal point. If you are planning your curriculum, learner has to be major stakeholder. This is the crux of the national education policy. And I'm relating this the philosophy of or the points which have been discussed in the national education policy with distance education. How it is very much close to the philosophy what we follow in distance education. Anyone, anytime, anywhere. Access, equity, and quality. At the beginning, I have discussed, yes, it talks about access and equity without compromising with the quality. The same philosophy is applicable. I am not limiting these features to other mode of education. This is and should be, yes, we are for the providing access, maximum accessibility to education with equity in an equitable manner, but we will not compromise with the quality. Now, okay. Now coming to what Dr. Deepak was saying, learner-centric education. A point is that as a teacher, how we can make our program, our courses, learner-centric. This national education policy focuses on learner-centric education, but how? How as a teacher we are going to approach the learner-centric approach? And first step towards that is that conduct the needs assessment study. Any program or courses, whatever you are planning to offer or you are conceptualizing, first step and foremost step is that as a teacher, you should go and conduct the need assessment studies. Whether that course or program is required or not. Whether this program or any new course which you are proposing will fulfill your institutional objectives or not. Because while you are designing any course or program, you should also take care of
what are the vision and mission of your institution. Suppose your institution is fully dedicated towards rural development, promotion of rural areas, development of rural areas, rural people. So your courses and program will be in the line with the what your institution aspire to do and what has been mentioned in the vision document. So beside institutional needs and requirements, you are also assess the needs of the prospective learners, whether your program will be accepted in the market or not, whether it will work or not. Because in every kind of academic endeavor, every kind of course design and development, a lot of efforts and finances are involved. So suppose if you come up with a program and no one is going to take admission, no one is ready to join in. They are saying, no, this is not as per our requirement. We do not need. What you will do? That will be a very embarrassing situation for you, because after a lot of investment, your program or course is not being accepted. That is not popular. People are not liking it. So that will be withdrawn. So whole efforts and money involved in the design and development of that course will go waste. So needs assessment is first step to carry out or design any kind of program or course. And moreover, while designing your program and course, needs assessment are very much necessary to know the socio-economic and cultural. We have to study what are the socio-economic and cultural needs of the target group for whom you are planning to launch a course. So this is the first point of learner-centric education, which National Education Policy talks about. And as a teacher, to fulfill those requirements, what we are supposed to do, we are discussing those points right now. Then first was the needs assessment. Then, as a teacher, you have to engage the learners in different activities. You cannot just give them a piece of paper or a textbook. Okay, go read and appear in the examination. National Education Policy says that besides providing them learning materials, you also involve them in different kind of activities. जब वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो रटन विद्या उसकी नहीं होगी. रटन विद्या से आपको छुटकारा पाना है, रोट लर्निंग नहीं करवानी. वो तभी संभव हो सकेगा when we are engaging them in different kind of activities. So if you are planning your curriculum or course, make sure as a teacher that you put a lot of activities in your curriculum. कुछ लोग कहते हैं कि लिटरेचर के हैं कोई या पार्टिसिपेंट्स कोई लिटरेचर के हैं इसमें? Is anyone from literature? Any participant from literature background? No. Okay. तो कहते हैं कि भाई हम तो लिटरेचर के हैं, हम क्या एक्टिविटीज देंगे? हमारा तो सब्जेक्ट मार्केटिंग नहीं है, हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें स्किल इन्वॉल्व है, और तो मैं इसमें एक्टिविटीज क्या दूं? आप लिटरेचर में भी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आप दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
कोई अगर हिंदी भाषा का विद्यार्थी है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर निराला जी की कविता पढ़ रहा है, आप उसको एक्टिविटी ये दे सकते हैं कि आपने निराला की कविता पढ़ी, जो इस कविता का जो मूल बिंदु है, मूल मंत्र है, क्या इस तरह की कोई कविता आपको मिली है, पढ़ी है आपने, उसको ढूंढिए, पता लगाइए, दोनों को कंपैरिजन कीजिए। इस रिदम पे कोई सिमिलर कविता हो सकती है, इसको पढ़िए, कविताओं को पढ़िए, उसके रिकॉर्ड करिए, दोस्तों को सुनाइए, क्लास में प्रेजेंट करिए। तो कविता जो है सिर्फ पढ़ने पढ़ाने और समझाने का नहीं है, बल्कि उसको आप थ्रू एक्टिविटीज भी आप उनको कहेंगे कि आप क्लास में इसको जोर से पढ़ेंगे, सभी सुनेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, इस तरह की कविताएं ढूंढ के लाएंगे। तो आप एज ए टीचर, it depends upon your vision and innovation strategy, which kind of activities you are going to inculcate in your curriculum. Okay, then cognitive जो है उनका जो सोचने का जो बच्चे का ढंग है, उसको आप सोचने वाला बनाइए। उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज उसकी जब बढ़ेगी तो रॉट लर्निंग जो अपने आप खत्म होगी, और उसको इस काबिल बनाइए कि वो बच्चा लगे कि 21st सेंचुरी का है। 21st सेंचुरी में के बारे में लोग कहते हैं कि दिस इज 21st सेंचुरी वेयर a kind of new learners have emerged. Who are those new learners? Those new learners are having critical minds. They are very creative. They are innovative people. They are very familiar with the technology. They have very good and convincing communication skills. So जब ये 21st सेंचुरी का न्यू लर्नर्स आ गया है, तो आपका उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से करनी है। जो आज जो 21st सेंचुरी का पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, वो 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी से काफी अलग है। आज सीखने का तरीका, पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल चुका है। तो एज ए टीचर वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स to face the challenges of 21st century or meet the demands of 21st century learners. Content से आगे निकलना है आपको। We cannot keep limited to you cannot keep learners limited to their content. आपने पास नहीं, content पढ़ो और content से भी आगे निकलो। और लर्निंग कैसी होनी चाहिए? Learning should be inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based. वो ऐसी लर्निंग हो कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आए, वो आपसे सवाल पूछे, प्रश्न पूछे कक्षा में, वो नई नई चीजों को डिस्कवरी करे और लाके क्लास में शेयर करे, डिस्कशन करे आपके साथ, और एनालिसिस करने के मादा उसमें हो, वो अच्छा एनालाइजर हो, वो इस तरह के बच्चे। तो इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा? दोज इन्वायरमेंट्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। क्योंकि कक्षा की जो लगाम जो है वो हमारे हाथ में होती है, कंट्रोल जो हमारा होता है। हम जिस तरह से अपना लेसन प्लान करेंगे, उस तरह से बच्चे उस पर अमल करेंगे। तो एज ए टीचर हमें भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम कैसे जो है अपने लर्निंग को या बच्चों की लर्निंग को इंक्वायरी बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड और डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड कर सकते हैं। और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप वी कैन एंगेज आवर स्टूडेंट्स एज वेल। हम अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करके उनसे पूछ सकते हैं कि टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन सर्टेन टॉपिक, which kind of strategies should we adopt, which kind of activities we can plan,
so that together we can discuss and learn. We can go for the collaborative learning. So if you engage them, they are 21st century learners. They are having a good skills. So those skills can be utilized, making your class more productive. आप उसके एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके अपने क्लास को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और यूजफुल बना सकते हैं. और एक ऐसा माहौल बनाए जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चे उसको एक्सपीरियंस करें तब उसको लर्न करें. क्योंकि एग्जाम्पल हमें सबको दिया गया है, हम सबने बच्चों में पढ़ा है. कोई भी गर्म चीज है बच्चों को पता नहीं होता, वो क्या करता है, ये कप है, ग्लास है, गर्म है, बच्चों को पता नहीं, उसने छुआ, हाथ जला. हाथ जलने के बाद उसको फिर कहिए बच्चों को दोबारा छूने के लिए, वो नहीं छुएगा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया कि चीज गर्म है, अगर मैं छूऊंगा तो मेरा हाथ जो है जल जाएगा. तो दिस लर्निंग हैज कम थ्रू एक्सपीरियंस. तो उसको इस सिचुएशन में डालिए, बच्चों को ऐसा प्लान करिए कि देयर लर्निंग इज डन थ्रू एक्सपीरियंसेस. टेक्स्ट जरूरी है, टेक्स्ट पढ़े, लेकिन उस अपने लर्निंग को जो है वो अगर वो एक्सपीरियंशियल हो तो ज्यादा अच्छा है. तो एक पॉइंट जो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच का था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो हम भी बात की. अब आते हैं अगले जो सेकंड पॉइंट है उस पे. हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके पार्ट 3 में चैप्टर 23 और 24 उसमें बात की गई है टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग एंड लर्निंग की. टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग एंड लर्निंग. पार्ट 3 चैप्टर 23 एंड 24 ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है. अब जब 21st सेंचुरी की हमने बात कर ली, तो कैन वी डिनाई the penetration of technology into our education system? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के टीचर्स हैं भाई, टेक्नोलॉजी तो प्राइमरी एजुकेशन में पहुंच गई. आजकल तो किंडरगार्टन का लड़का जो है, वो बच्चा जो है, वो उसको पता है कि यूट्यूब का वीडियो कैसे चलता है, वो खुद से ऑन कर लेता है, खुद से वीडियो चला के देखता है. उसको पता है कि आवाज कैसे कम होती है और कैसे जो है ज्यादा की जाती है ना. तो इसका मतलब ये है कि जब ये सिचुएशन है 21st सेंचुरी में, हमने न्यू लर्नर्स को पा लिया, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जो है प्राइमरी लेवल तक चली गई, तो हायर एजुकेशन में तो मेरे ख्याल से और आसान होना चाहिए इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी. बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में, दोज ऑल आर ऑलमोस्ट 18+, और टीचर्स भी ठीक ठाक एज के हैं, मैच्योर हैं. तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो यहाँ बड़े लेवल पर होना चाहिए. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको ध्यान में रखा है. इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस ऑन इन अ स्पेसिफिक चैप्टर, टू स्पेसिफिक चैप्टर नंबर 23 and 24, that integration of technology is essential part of teaching and learning in higher education. How you can utilize those technologies and ICT tools to create rich content, provide effective support services and educational delivery strategies. आप जब ICT का इस्तेमाल करते हो तो आपका कंटेंट जो है रिच होना चाहिए. आप ICT का इस्तेमाल करके कंटेंट को रिच बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक साइंस विषय पे, साइंस के एक टॉपिक पे आप कुछ कंटेंट तैयार कर रहे हो. आप एक यूनिट मान लिया, एक चैप्टर लिख रहे हैं.
आपने चैप्टर लिखा, वेल एंड गुड, लेकिन पता चला कि आपका चैप्टर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा या बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और सेम टॉपिक पे किसी और कहीं और से डाउनलोड किया हुआ कंटेंट जो ओईआर के फॉर्म, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है, वो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। तो आपने जो मेहनत की, आपने जो प्रयास किया, उसका फल क्या हुआ? बच्चे आपके चैप्टर नहीं पढ़ के कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं जो तो फ्री में अवेलेबल है वेबसाइट पे। कहीं भी गए हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज उन्होंने डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकाल के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप आईसीटी टूल्स हैं, उसके माध्यम से आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए और अपने कंटेंट को मिलाइए, और जो एग्जिस्टिंग जो टेक्स्ट जो है, यूनिट है या चैप्टर है, उससे भी अच्छा चैप्टर आप लेके आ सकते हो, बशर्ते कि आपके अंदर आईसीटी का जो है कॉम्पिटेंसी हो, आप डिफरेंट टूल्स पे काम करते हैं। वहां से हमने कहीं से ग्राफिक्स लिया, कहीं से वीडियो लिया, कहीं से यूआरएल लिए, कहीं से कंटेंट लिए, सभी को लेकर के। हाँ, लेकिन दो शुड बी ओपन रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओईआर होनी चाहिए। और ओईआर भी आप सभी ओईआर नहीं यूज कर सकते, दोज यूआर विच आर क्रिएटिव कॉमन्स में है और फ्री टू यूज है, जिसको आप किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जिसकी लाइसेंसिंग पॉलिसी बहुत इजी है, आसान है, जिसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस ओईआर को लीजिए, डिफरेंट सोर्सेस और भी मटेरियल जमा कीजिए और अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को मिलाइए और एक चैप्टर तैयार कर दीजिए। That is going to be a rich content, and that has happened because of use of ICT, use of different tools. Support services, आपके learners हैं, yes, they are coming to the campuses, but during pandemic we have seen that how much we were, almost jailed in our houses. In that condition, what happened? It was a technology which came out to help our learners, help our students. So National Education Policy also realized the potentiality of technology in the post-pandemic scenario, and now it's saying that it should be also utilized for the helping of students and educational delivery strategies. क्रिएट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आप अपना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म कीजिए, जो एग्जिस्टिंग है, स्वयं का प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रोग्राम्स आप बनाइए, डेवलप करिए, उस पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अभी कितना टाइम बचा है हमारे पास डॉक्टर सुरभि? We have time. है ना, अभी टाइम हमारे पास? We have approximately 25 minutes. ओके, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं स्वयं के, दीक्षा के, आप उसको इस्तेमाल करिए। आप अपने क्लासेस को, मान लीजिए आप फेस टू फेस, Excuse me, sir, sorry to interrupt in between. We have 15 minutes. ओके, अभी बहुत सारा बाकी है। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा अपनी रफ्तार बढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि अभी मेजर पोर्शन बचा हुआ है, अभी मैं कोशिश करता हूँ उसमें। ठीक है, चलिए। और ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग की भी इसमें बात हो रही है कि आप ब्लेंडेड में जाइए। ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता, बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हम सभी चीजों को खिचड़ी पका देते हैं। फेस टू फेस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल, डिस्टेंस, सभी आकर के मिल जाते हैं और दैट बिकम्स ब्लेंडेड टीचिंग एंड लर्निंग। तो आप अगर कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, तो आपको किसी ने अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने से नहीं रोका है। यू कैन गो ऑनलाइन, जहां जरूरत हो आपने क्लास ले ली, कभी ऑनलाइन क्लासेस लगा दी, कभी सिंक्रोनस डिस्कशन हो गया, कभी असिंक्रोनस हो गया, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन हो गई, लड़के प्रिंट मटेरियल भी पढ़ रहे हैं। तो थ्रू दीज अप्रोचेस वी कैन मेक आवर टीचिंग एंड लर्निंग
मोर ब्लाइंडेड। ऑनलाइन असेसमेंट आजकल हो रही है, आजकल हम लोग खुद ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। एक एग्जांपल गूगल फॉर्म का को ही लेकर के एक छोटा आप जो है एक टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है और उसका इस्तेमाल करना है। एक गूगल का हमने एग्जांपल दिया, गूगल फॉर्म से भी आप एक बच्चे का जो है टेस्ट आप ले सकते हो ऑनलाइन। और बच्चों को आप इनकरेज करिए कि यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म मोर एंड मोर। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप उनको बताइए कि कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आजकल मार्केट में इतने आ गए हैं कि जहां पे आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, फैक्चुअल मिस्टेक्स मिलेंगी, कॉन्सेप्चुअल जो है क्लैरिटी उसमें नहीं है। कहीं से कॉपी पेस्ट लेकर करके उनको पेस्ट करके अपना मटेरियल बच्चों को वो ऑनलाइन दे देते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है। एज अ टीचर यू आर सपोज टू होल्ड देयर हैंड्स and tell them कि these are the digital platforms where you can go and access the resources। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को आपको छोड़ना नहीं है। आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कक्षा में आ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि कक्षा से पढ़ाने के बाद आपका काम खत्म हो गया। आपको कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है, उससे गाइड करना है ना। उससे क्या होगा, उसकी लर्निंग जो है फैसिलिटेट होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो दिव्यांग जन हैं, ऐसे बच्चे हैं जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी से आए हैं, जिनका सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस उतना नहीं है, उतना इनबिल्ट नहीं, उन बच्चों को आप पे खास ध्यान देना है। उनकी काउंसलिंग और गाइडेंस की को आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उन पे आप ज्यादा समय दीजिए। ये एक अदर एरिया है डिस्टेंस इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिस पे बात की गई है। हाँ, अब हम काउंसलिंग की बात कर रहे थे। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं एक एग्जांपल इसको ओरियल के कॉन्टेक्स्ट में मैं दूंगा काउंसलिंग का, कि काउंसलिंग अगर बच्चों को करनी है तो कैसे करनी है। और काउंसलिंग इज एप्लीकेबल, आप ये नहीं मान के चल सकते हैं कि बच्चे काउंसलिंग जो सेशन जो है सिर्फ एक डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है, बल्कि आप कन्वेंशनल मोड में पढ़ाते हुए भी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उसका नाम आप कुछ और दें, लेकिन वो असल में काउंसलिंग होता है। क्या क्लास के बाद बच्चे आपसे मिलने नहीं आते? क्या क्लास के बाद बच्चे आपसे बात नहीं करते? क्या बच्चे आपको कभी फोन नहीं करते कि सर मुझे ये परेशानी है, मुझे आप मदद करें, या मैं क्या करूं? क्या कैरियर से संबंधित सवाल नहीं पूछते? क्या बुक्स के बारे में नहीं पूछते कि मैं इस टेक्स्ट में बुक्स के अलावा और क्या क्या मटेरियल पढूं? क्या प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपसे नहीं पूछते? पूछते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन है, जो डिस्टेंस एजुकेशन टीचर्स भी करते हैं और आप भी करते हैं। तो एज ए टीचर हमें किस तरह से उनके क्वेरीज का, उनके काउंसलिंग का, उन्हें हम कैसे, सपोज कोई उन्होंने असाइनमेंट्स दिया, असाइनमेंट्स हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन में तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम प्रोग्राम है जिसमें असाइनमेंट जो है कंपलसरी कंपोनेंट है। ऑलमोस्ट 25% जो वेटेज है किसी भी कोर्स का वो असाइनमेंट्स होता है, बाकी 75% टर्मिनल एग्जामिनेशन पे होता है। तो वो असाइनमेंट्स जो बच्चे हैं, चाहे डिस्टेंस के हो या कन्वेंशनल मोड के हो, आपके पास सबमिट करते हैं। तो एज ए टीचर क्या आप उसमें फीडबैक नहीं देते? देते हैं। लेकिन आपको एज ए टीचर विच काइंड ऑफ फीडबैक यू आर सपोज टू प्रोवाइड, मैं उस पर भी थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जो कमेंट्स हैं, जो हम कमेंट्स बच्चों को देते हैं, चाहे वो हम असाइनमेंट्स में दें या किसी भी वर्क पे दें, हमने कोई प्रोजेक्ट उनको दिया, उन्होंने प्रोजेक्ट हमें सबमिट किया, तो विच काइंड ऑफ कमेंट्स वी आर सपोज टू प्रोवाइड देम।
कमेंट्स को हम जनरली दो तरह के कमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज टीचिंग कमेंट्स and number 2 is non-teaching comments. You can see teaching comments are divided into 4 different kinds of comments. Number 1 is positive comments, constructive comments, number 3 global comments, and number 3 personal comments. जो ऊपर के जो 4 कमेंट्स हैं दोज आर कॉल्ड टीचिंग कमेंट्स. अब फिर डिटेल में इसको हम आगे देखेंगे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स कैसे क्या होता है. पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, ग्लोबल एंड पर्सनल कमेंट्स. नॉन टीचिंग कमेंट्स में आप देख लीजिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कमेंट्स. हार्मफुल कमेंट्स, hollow comments, misleading comments, null comments and negative comments. अब हम इन कमेंट्स का कहां पे कैसे इस्तेमाल करते हैं. As a teacher, we are supposed to make which kind of comments? I am asking from participants. Anyone can come forward. As a teacher, which kind of comments we are supposed to make? Teaching or non-teaching comments? Anyone from participants can come up. Even Dr. Surbi. Dr. Surbi? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, which kind of comments we are supposed to make? Constructive comments. Okay. As a teacher, we are supposed to make all those 4 comments which are given over there, but it depends upon the situation. Which kind of comments are required at a specific time. So teaching comments are divided into 4 different comments. So all these comments will be under the teaching comments, which is a work which is part of our teaching profession while we are examining the projects and proposals and assignments, etc. And non-teaching comments we are supposed to not make. We are supposed to avoid them. So now we will come in detail about say. I will just give an example of positive comment, and these are the comments which must be written. First is the positive comments, because it is positive comments which motivates the learner, encourage them to improve future performance. अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं आपको बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हुई है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज categorically saying that we are supposed to move from summative evaluation to formative evaluation, summative assessment to formative assessment. जब formative assessment की बात करते हैं तो that is for learning. formative assessment में आप किसी की रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते, ठीक है, ग्रेड देते हो जिसका वेटेज वहां पे टर्म एग्जामिनेशन समेटिव असेसमेंट में होता है. लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन मकसद है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आपको ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिससे बच्चे की लर्निंग क्या हो, इंप्रूव हो, नॉट असेसमेंट ऑफ लर्निंग. आपको फर्क है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग. असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज अ काइंड ऑफ समेटिव असेसमेंट. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद ही यही होता है कि यू आर फॉर्मेटिंग द लर्निंग ऑफ द लर्नर्स, यू आर इनकरेजिंग, यू आर बिल्डिंग द लर्निंग, यू आर हेल्पिंग द लर्नर्स टू enhance their learning, enhance their knowledge base. तो पॉजिटिव कमेंट्स जो है आपके वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आकर के क्या करता है, बच्चे के लर्निंग को इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, जिससे उसकी लर्निंग क्या है वो इंप्रूव होती है. और जब बच्चे को आप पॉजिटिव कमेंट देते हो तो उसका ऑब्वियसली जब वो मोटिवेट हो जाता है तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो
सुधार आता है उसमें। आज एक बच्चे किसी का मान लिया कि सी आया, आपने उसको अभी डिस्करेज कर दिया, करे तुम्हारा तो सी आया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, गॉड ब्लेस यू, क्या होगा? वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। वो कल बी ला सकता था लेकिन वो नहीं लाएगा। लेकिन आपने उसको कह दिया कि अच्छा ठीक है सी आया अभी, कोई बात नहीं, मेहनत करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और ये एरियाज है, इस पे काम करो। तो पॉजिटिव कमेंट्स मोटिवेट लर्नर्स, encourages them to improve their future performance. तो आप कोई आंसर जब बच्चा लिखता है तो आप उसको लिखिए भी, उसमें अगर आप कमेंट्स लिखते तो आप लिखिए कि आपने बहुत सही इंफॉर्मेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन आपने अच्छा दिया है, इलस्ट्रेशन भी अच्छा है ना। जिससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल है आपका पॉजिटिव कमेंट्स का, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। योर एक्सप्लेनेशन विथ रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर डायग्राम नंबर 1। आपने उसके आंसर को पढ़ा और आपने उसके असाइनमेंट पे ये कमेंट लिख दिया। आप अपने आप को एक लर्नर यहाँ पे मान के रखिए कि आपको नहीं लगता कि ये कमेंट जो दिया है एक टीचर ने आपके असाइनमेंट पे या आपके प्रोजेक्ट पे, आपको मोटिवेट करेगा? श्योर, दैट इज गोइंग टू मोटिवेट यू। सो इसलिए एज अ टीचर हमें क्या करना है, अपने लर्नर्स को पॉजिटिव कमेंट्स देने हैं उनके असाइनमेंट्स पे, उसके प्रोजेक्ट्स पे। हाँ, अगर उसने गलत लिखा है तो उसका भी लिखने का तरीका है, लेकिन उसको हम कैसे, किस कमेंट, कंस्ट्रक्टिव कमेंट बनेंगे जो आगे अभी आ रहा है, ये देख लीजिए। कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, उस बच्चे ने अगर गलत लिखा है तो आप क्या कह रहे हो, उसको सजेशन दे रहे हो, यू आर ऑफरिंग द कंस्ट्रक्टिव सजेशन एंड मेंशनिंग क्लियरली दैट हाउ his or her answer is going can be improved। आप उसको सजेस्ट करते हो कि आपने आंसर सही लिखा, लेकिन अगर ये पॉइंट भी लिखा होता तो आपका आंसर और अच्छा हो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखा है नीचे, यू कुड हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन। आपने कुछ आंसर पूछा था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे, लेकिन बच्चे ने हो सकता है क्वेश्चन समझा नहीं होगा, उसने किसी और टॉपिक पे लिख दिया, तो आप उसको नहीं कह रहे कि तुमने बहुत ही गलत आंसर लिखा, ये मैं तुमको 0 मार्क्स दे रहा हूं। आप उसको कह रहे हो कि आप को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे डिस्कस करना चाहिए था विथ एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन। तो ये जब कमेंट बच्चे के पास पहुंचेगा, जब वो देखेगा, तो उसके मन में डाउट थे या उसकी परेशानी, जो वो कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ पाया था, वो क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा और सेम क्वेश्चन उसको टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो देयर ही विल परफॉर्म वेल। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स। तो पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, देन कमिंग टू द थर्ड वन। हाँ, the positive and constructive comments are those comments which a teacher are supposed to give and must be given, and these are the few comments which should be written with caution. Negative comments, null comments, what are the negative comments? Indicate whether the answer is incorrect, incomplete or inadequate, but do not indicate what is correct and how to make it complete and adequate। आपने सिर्फ उसको कह दिया कि आपने जो आंसर लिखा वो सही नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा, बताना चाहिए था कि फर्स्ट पार्ट आपका सही था, दूसरा पार्ट गड़बड़ था। तो आपने क्या किया, ब्लैंक आपने लिख दिया, द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर इज नॉट क्लियर, द सेकेंड पार्ट इज नॉट रिलेवेंट। ये
निगेटिव कमेंट है, इससे आपको बचना है। नल कमेंट्स, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका लर्नर्स को कोई पता नहीं चलता। हम सब है, आंसर स्क्रिप्ट हमारे पास आते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं, हम लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बस कोई बच्चे का आंसर हमें नहीं समझ में आया तो हम उसको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं, या कोई भी अलग तरीका मार्क्स, मतलब हमने वहां पे निशान लगाया और आगे बढ़ गए। तो कोई सिंबल ऐसा है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बच्चा उसको समझ ही नहीं पाएगा कि आप वहां पे कहना क्या चाहते हो, तो वो अपने आप को इंप्रूव कैसे करेगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी असाइनमेंट अगर आप बच्चे से दिया है अपने इवेल्युएट करने के लिए, तो आप उस पे कमेंट्स ऐसे लिखेंगे जो रीडेबल हो, जिसको बच्चा समझ सके। हाँ, वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। Those comments will be either positive or constructive. It should not be negative, or it should not be written as a null comments. Okay. और एक थर्ड एग्जांपल है आपका, ये हॉलो कमेंट्स का है। इस तरह के कमेंट्स आपको अवॉइड करना है, इट मस्ट बी अवॉइडेड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सजेस्ट नहीं करता, कुछ इंडिकेशन नहीं होता कि बच्चे को क्या करना था क्या नहीं करना था। इस तरह के हॉलो कमेंट्स अगर देंगे, जैसे आप एग्जांपल देखिए, योर आंसर इज सो सो, यू कैन इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन, यू मे स्पेंड सम मोर टाइम इन राइटिंग दिस आंसर। कुछ मीनिंग निकल रहा है यहां से इस सेंटेंस से जो किसी टीचर ने लिखा है किसी असाइनमेंट पे या किसी आंसर स्क्रिप्ट पे या किसी प्रोजेक्ट पे? नहीं। सो बच्चे को यहां से एकेडमिकली कुछ नहीं मिल रहा, कुछ क्लियर नहीं है कि बच्चे को आप क्या फीडबैक दे रहे हैं। तो इस तरह के जो हॉलो कमेंट्स हैं, दैट हैज टू बी अवॉइडेड। उस तरह से थर्ड टाइप ऑफ कमेंट्स हैं, देखिए ये मिसलीडिंग कमेंट्स होते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, लर्नर्स को मिसगाइड कर देंगे। अब बच्चे ने एक असाइनमेंट लिखा, Excuse me, sir. क्या Sir, I'm so sorry to interrupt you in between of this very wonderful session. But we are running short of time for Okay. our next session. So we request you to, if you could kindly wind it up. yeah, 5 minutes more, 5 minutes more. 5 minutes. Thank you so much. Okay. So misleading comments is actually will mislead the learner. And as a teacher, it is not our job to mislead our learner. Our job is to format their learning, enhance their learning, help them in a maximum possible way. So you can read the example of the misleading comments. I am not going to tell you in which unit you will get this answer. Better you go through the whole block once again. अगर हमने वहां पे बच्चों को कह दिया होता कि भाई इस टॉपिक पे तुम्हें पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ लो, चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, तो ये बच्चे के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। तो आप सीधे कह रहे हैं उसको कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन विच यूनिट यू विल गेट इट, बेटर यू गो थ्रू द होल ब्लॉक वंस अगेन। अब बच्चा पूरा ब्लॉक लेकर के बेचारा ढूंढ रहा है, उसका 2 घंटा 3 घंटे बर्बाद होगा उस टॉपिक को खोजने में। तो अगर हम एज अ टीचर हमने अगर उसको शुरू में ही कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दे देते उसको, तो उसका टाइम बच जाता, उसकी लर्निंग अच्छी हो जाती। बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, हमको डिस्टर्ब करते हैं, उसको हर्ट करते हैं। अब किसी कोई बच्चा है जो रूरल बैकग्राउंड से आया है, आपको सरकारी स्कूल में आज भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कक्षा 5 अच्छे आपने क्या लिखा उसको कमेंट, आर यू राइटिंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मेनी ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, और क्या लिखा आगे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पास मार्क्स,
क्या एज ए टीचर हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। इससे बच्चा क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। जो इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था पढ़ने के लिए, तो इंटरेस्ट, आप किसी चीज को एक कंस्ट्रक्टिव वे में, एक पॉजिटिव वे में लिख सकते थे, जो हमने नहीं किया। ओके, चलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने बात कर ली है। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, ये एक अहम बिंदु है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जितनी सारी बातें डिस्कस की एज ए टीचर, व्हाट वी हैव बीन सजेस्ट टू डू एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू जस्टिस विद आवर प्रोफेशन। तो बट जैसे मैंने बात किया लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, देन हमने बात की सपोर्ट सर्विसेज, देन हमने बात की काउंसलिंग एंड गाइडेंस, देन हमने मल्टीलिंगुअलिज्म में बात की, देन हमने और क्या क्या बिंदु थे, कई सारे बिंदु थे जो हमने बात की उन सभी चीजों पे। हाँ, टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स ऑल्सो रिक्वायर some sort of training, continuous professional development, training and capacity building. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज को रियलाइज किया है कि अगर हम टीचर्स से इतने सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मल्टीलिंगुअल कोर्स मटेरियल तैयार करें, वो लर्नर फ्रेंडली करिकुलम भी डिजाइन करें, वो नीड असेसमेंट भी करें, वो इनोवेटिव असेसमेंट स्ट्रैटेजी भी अपनाएं, वो ऑनलाइन असेसमेंट भी करें, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी देखें, वो भी डिजाइन करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी यूज करें, स्वयं भी डेवलप करें, वगैरह सारी चीजें करें, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या? क्योंकि सभी टीचर्स जो है, जिस तरह सभी लर्नर्स एक समान नहीं होते, सभी स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, वी टीचर्स आर ऑल्सो नॉट एट द सेम लेवल of our competence, and especially in the field of technology. So national education policy ने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ये emphasize किया है कि there should be a mechanism to professionally, ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है एज अ टीचर कि जहां भी हमें मौका मिलता है कि है अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, वो हम खुद से इंटरेस्ट लें. We should come forward and inform our management. These are the areas where we need training. These are the areas where we need our capacity building. और अगर मैनेजमेंट इनोवेटिव है, मैनेजमेंट अगर फॉरवर्ड लुकिंग है, तो आई एम श्योर that they will also come forward. Yes, our faculty members need a specific training in these specific areas. They will call experts or they will nominate you or send you to the different training programs. So I hope that we as a teacher will try our best to contribute meaningfully towards the implementation of National Education Policy 2020. With these words, I will stop here. Thank you. Thank you so much. Yeah, Dr. Surbi. Thank you so much, sir. Dr. Vatsala is also here. Yeah. Thank you so much, sir, for being with us on this platform. And you gave us a very informative session, as we all are having different kinds of sessions on the NEP 2020. But the thoughts which you shared in the previous slides, that was very commendable. And you told us the pain points of the NEP during this session. We really feel very sorry to you for the interruption in between, because as we are having lack of the time and we are bounded with the time limits also. But yes, your session was very commendable, and I must say that you are a very gentle and very noble person, that you accepted our invitation within a very short span of time. Thank you so much, sir. Thank you so much for being with us. And in future also, we would like to connect with you.
Over to you, Dr. Thank you. Vatsala. Yeah. Thank you so much, madam, for so beautifully wrapping up this session. And again, a very big thank you to Dr. Ali Asgar. Like ma'am has also conveyed to all the participants also, sir has been so kind. We invited him at such a short notice, and he did not even took a minute to think if it will be possible or not, because of course with the kind of experience that he possesses. And sorry, sir, for interrupting you in between, but we are having a very, we are at a very crucial juncture, because we have to cover so many topics in this FDP that are still left. So we had to interrupt you in between, sir. But, we would really like to take advantage of your expertise once again, and we are going to invite you again very soon. And we hope that you will oblige us once again. Thank you so much. Thank you. This session, thank sir. you, Dr. Yeah, thank you, Dr. Vatsala and Dr. Surabhi and Dr. Navneet. Actually, Dr. Manisha is one of my good friend and colleague as well. So actually, the message of Dr. Surabhi came from through her only. So I told her frankly, see, we are teacher. हम अगर अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? So kind of you, sir. So kind of है you. जो हमसे ज्यादा रिलेटेड है. तो मेरे ख्याल से बाकी लोग तो पढ़े या नहीं पढ़े, एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑलमोस्ट ड्यूटी कि जो भी एरियाज है उसको पढ़ें और उसको अपने तरीके से, हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं उसको हम उसे टेक अवे लें. So it was really nice interacting with all of you, Dr. Surbi, Dr. Vatsala, and Dr. Navneet, and all the other participants from across the country. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your kindness. And it's our pleasure that we have a great speaker like you on this platform. Thank you so much, sir. Thank you, sir. And with that, we finish this very first session of day 5. And we will observe a very short break of another 10 minutes, and then we'll begin with session 2. And we have Dr. Alok Kumar joining us in this session all the way from Delhi University. So please stay tuned. Of course, we can have a short break, and then we'll see each other at 11:30. Thank you so much, everyone.